गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के ओर। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने की नोट एड्रेस इसका जो है वो डिलीवर किया है। ये एक प्रोग्राम है जो कि आपकी लॉन्च किया गया है अभी इस रिसेंटली। और इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑलरेडी चल रहा है उसमें जो कल्चर मिनिस्ट्री प्रोग्राम्स कर रही है वो ब्रह्म कुमारी इसके साथ मिलकर इस आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर जो ये प्रोग्राम है इसको वो जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या कि 30 से ज़्यादा कैंपेन्स और 15,000 प्रोग्राम्स प्लान किए गए हैं जो कि ग्लोबली नॉट जस्ट इन इंडिया बट पूरी दुनिया में इसको मनाया जाएगा। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव तो आपको पता ही है, हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। हम 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इसको पीपल ऑफ इंडिया को जो है वो डेडिकेट किया गया है। और इसमें इसको 12 मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था क्योंकि उस दिन से जो है वो 75 आई एम सॉरी 75 वीक का काउंटडाउन शुरू हुआ था हमारी 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस से को लेकर। ठीक है। तो इसलिए जो है हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास। तो यूनियन पावर सेक्रेटरी जो है उन्होंने एक मीटिंग की है और नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास की प्रोग्रेस को देखा है। तो जो आपका नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास है उसके अंदर क्या है कि आपके जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें आपके जो बॉयलर होता है उसके अंदर कोल के साथ साथ आपके जो है ये आपका स्टबल होता है या जो आपको बायोमास होता है उसको भी बर्न कर सके, ताकि जो है एक तो कोल जो है वो कम यूज़ होगा। मतलब अगर हम 100 टन कोल को बर्न करते हैं तो उसको हम 95 करेंगे या फिर हम 90 तक लेके जाएंगे। ठीक है। तो हम 10 टन कोल को बचा लेंगे। दूसरा, हम अपने स्टबल बर्निंग के इशू को भी रिजॉल्व कर सकेंगे क्योंकि वो बायोमास जो इकट्ठा होगा वो हम उसको इस जगह पर यूज़ करना शुरू कर देंगे। थर्मल पावर प्लांट्स की जो है उससे पावर जनरेट करने के लिए हम उसको यूज़ करने लगेंगे। ठीक है। तो अब जो है को फायरिंग कहते हैं इसको, कि बायोमास को आप कोल के साथ को फायरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही एक हमारा मिशन है जिसमें हम फार्मर्स की एडिशनल इनकम भी मिल जाएगी, हमारा कोल भी कम यूज़ होगा। तो अक्टूबर 2021 में जो है इन्होंने गाइडलाइंस निकाली थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने और कहा कि सारे थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उनको 5% से बढ़ाकर अब 10% तक बायोमास को फायर करना पड़ेगा। तो नेशनल मिशन ऑन यूज़ ऑफ बायोमास यही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने निकाला। याद रखो, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का नहीं है, पावर मिनिस्ट्री का है, जिसमें कि जितने भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें बायोमास को भी को फायरिंग की जाएगी। ठीक है। तो अभी हम प्रेजेंटली 5% करते थे लेकिन उसको बढ़ाकर अब कहा जा रहा है कि हायर लेवल्स पर लेके जाओ, 10% तक लेकर जाओ। और बॉयलर के डिज़ाइन को भी जो है उसमें भी आप रिसर्च करके उसको भी ठीक से उसको आप इम्प्रूव करो ताकि वो हायर अमाउंट ऑफ सिलिका और एल्केलाइज जो है जो कि बायोमास में मौजूद होते हैं उसको हैंडल कर सके। ठीक है। तो ये ही हमारा मिशन है, इसको लॉन्च किया गया था और ये मई में लॉन्च किया गया था। आई थिंक मई 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और अक्टूबर 2021 में गाइडलाइंस निकाली और कहा कि इसको 5% से जो है बढ़ाकर 10% तक बायोमास को को फायरिंग करो। ठीक है। जैसे आपकी इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है ना, वैसे ही समझ लो बायोमास की ब्लेंडिंग हो रही है आपकी थर्मल पावर प्लांट्स में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है I4F। तो जो इंडिया और इसराइल है उनका ये एक प्रोग्राम है, एक इंडिया इसराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड। तो उसकी अभी 8th गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई है जिसमें इंडिया और इसराइल दोनों के एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें 3 R&D प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जो कि $5.5 मिलियन के हैं। ठीक है। तो ये I4F क्या है? ये इंडिया और इसराइल के बीच का एक प्रोग्राम है, एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया के बिहाफ पे और इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी जो है वो इसराइल के बिहाफ पे उन्होंने साइन किया था। इसमें होगा क्या कि हम ऐसे R&D प्रोजेक्ट्स को जॉइंटली जो है वो प्रमोट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे जो कि हमारी इंडिया और इसराइल की कंपनीज करना चाहते हैं इकट्ठे होकर। तो इसमें इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से गीता गीता क्या है, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, वो पार्टिसिपेट कर रहा है और वो इसराइल के साथ मिलकर इस जो है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। तो गीता को देखते हैं कि क्या है। गीता जो है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने
CII के साथ मिलकर बनाया है। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्री इनोवेशन होती है उसको फंड कर, इंडस्ट्रियल इनोवेशन को फंड करता है ये प्रोग्राम, और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट और स्ट्रेंथन करता है उस प्रोग्राम को, ताकि उसको हम कमर्शलाइज भी कर सकें। 50% तक का R&D एक्सपेंडिचर का खर्चा उठाता है अगर हमने, हमारी गवर्नमेंट किसी फॉरेन गवर्नमेंट, खासकर कनाडा, इजराइल, कोरिया, कोरिया ये साउथ कोरिया होगा, ठीक है, तो इटली, स्पेन, स्वीडन, इनके साथ मिलकर अगर कोई हमारी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करना चाहती है तो ये गीता जो है 50% तक का R&D का खर्चा उस प्रोग्राम का उठाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अब ये देखने को मिला है कि इवन HIV और मलेरिया से भी ज़्यादा जो डेथ हैं वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही हैं। तो होता क्या है कि पहले आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो आप कोई दवाई लेते थे, लेकिन अब वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने की वजह से दवाइयों का कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं लोग, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का, तो उससे क्या होता है कि जो वो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है उस पर्टिकुलर दवाई की। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अब देखने को मिला है कि बहुत से ऐसा बैक्टीरिया जो है, जो पहले जिन दवाइयों से ट्रीट हो जाते थे, लेकिन अब वो उनसे नहीं ट्रीट हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खासकर बैक्टीरिया या वायरस भी को भी कह सकते हैं, वो किसी भी एंटी माइक्रोबियल, जिसको हम एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं, उससे लड़ने में कामयाब हो गया है, क्योंकि लोगों ने उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट्स का, बीच में ही छोड़ दिया, कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं किया, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स को शुरू किया, तो उससे क्या हुआ कि ट्रीटमेंट जो है वो इनइफेक्टिव हो गई। ठीक है, तो अब डेटा ये कह रहा है कि 1.27 मिलियन पीपल जो है 2019 में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से मर गए। ठीक है, और 49.5 लाख डेथ्स जो है वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये कौन सी डेथ्स हैं जिसमें कि ये पता भी लग गया कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो उसने जो है इन्फेक्शन किया है, लेकिन उसके खिलाफ इतनी रेजिस्टेंस थी एंटी माइक्रोबायोटिक्स की कि वो कुछ कर नहीं पाई और वो उसकी वजह से डायरेक्टली जो है डेथ हो गई। ठीक है, तो अब देखा गया है कि HIV या एड्स और या फिर मलेरिया में 8.6 लाख या फिर 6.4 लाख डेथ्स हुई रिस्पेक्टिवली, लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से ये डेथ्स ज़्यादा हुई। ठीक है, तो आपके ड्रग्स, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जैसे जो होते हैं आपके ई कॉली, से ऑरस, केन, क्लेब्सिella निमोनिया, एस निमोनिया, ए बॉमनी, ए एरोगिनोसे। ओके, सो ये बहुत सारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हैं, इससे ही सिर्फ 9.29 लाख डेथ्स जो है वो वर्ल्ड वाइड हुई। और उससे क्या हो रहा है कि अब देखो, कोविड के टाइम पर, कोविड एक वायरल डिसीज़ है, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाती क्योंकि वो एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, तो आप बैक्टीरिया को मारने की दवाई से वायरल डिसीज़ का कैसे इलाज कर सकते हो? लेकिन ग्लोबली, खासकर इंडिया में भी, अब आप देख रहे हो कि एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं जब कोविड हो जाता है किसी को, तो उससे क्या हो रहा है कि इतनी ज़्यादा, जब वो बिना मतलब का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, तो जो उनकी बॉडी में बैक्टीरिया होंगे वो उससे, उस दवाई से, उस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। तो जो नेक्स्ट पेंडेमिक है वो बैक्टीरिया इंड्यूस्ड पेंडेमिक हो सकती है, क्योंकि हमने इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खानी शुरू कर दी, और वो जो बैक्टीरिया है वो अब उन दवाइयों से रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो पेंडेमिक है वो बैक्टीरिया लेड पेंडेमिक हो। ठीक है, खासकर ये 6 बैक्टीरिया जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो BSP के जो चीफ है मायावती जी, उन्होंने बोला है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और ज़्यादा जो है वो मजबूत बनाओ, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि यूपी इलेक्शंस के में या फिर जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है लोग पार्टीज़ को बदल रहे हैं। तो तो एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में इसको डाला गया था। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरी गिव अप करता है, या फिर वो पार्टी की जो डायरेक्शन है कि उसे कौन सी वोट डालनी चाहिए, जब खासकर पार्टी ने व्हिप इशू किया हो, अगर वो उसको वायलेट करता है, डिसोबे करता है, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू होता है, और वो लेजिस्लेटर को जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा। ठीक है, अब ये लॉ जो है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों
दोनों में लागू होता है। और इसके ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो किहोतो होलोहन वर्सेस जचगिलू एंड अदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जब तक स्पीकर या चेयरमैन का डिसीजन नहीं होता तब तक हम जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं कर सकते इस केस में, एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो आपने देखा होगा कि बहुत से केसेस में क्या होता है, खासकर स्टेट असेंबलीज में जो स्पीकर ऑफ द हाउस होते हैं वो जान के डिसीजन नहीं लेते इसके ऊपर, क्योंकि कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो पूरा का पूरा वो 5 साल तक बैठे रहते हैं पूरी असेंबली के टेन्योर के टाइम तक, वो उसका डिसीजन नहीं लेते, ताकि जो है इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू जो है वो एप्लीकेबल ना हो पाए। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है वो 10th शेड्यूल में कहते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है, आई एम सॉरी, जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है इसमें जुरिस्डिक्शन जो है, कोर्ट जो है वो जो इंटरफेयर नहीं कर सकते, और डिसीजन ऑफ द स्पीकर या फिर चेयरमैन जो है वो फाइनल होगा। ठीक है। इवन जो वैलिडिटी है, मतलब जो एक्शन लिया गया है उसको, उसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है किहोतो वाले ही केस में 1992 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अगर एक बार डिसीजन लिया है तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसीजन नहीं लेता तब तक सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक कैच है कि कोई भी टाइमलाइन नहीं है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कब तक डिसीजन लेना है। ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 साल तक बैठे रहते हैं वो, कोई डिसीजन नहीं लेते ताकि कोर्ट की इंटरफेरेंस ना हो पाए। ठीक है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, तो कहा जा रहा है एक्सपर्ट कमेटीज बनाई गई हैं, उन्होंने बोला है कि जैसे कि आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केस में होता है, तो वैसे ही और इलेक्शन कमीशन की एडवाइस पर प्रेसिडेंट को ये एक्शन लेना चाहिए एमपीज के केस में, और गवर्नर को ये एडवाइस एक्शन लेना चाहिए एमएलएस के केस में। मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पावर छीन लो, प्रेसिडेंट और गवर्नर के हाथ में ये पावर दे दी जानी चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि किसी को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Azadi ka Amrit Mahotsav se Swarnim Bharat ke और। So PM Modi has recently delivered the keynote address at the national launch ceremony of Azadi ke Amrit Mahotsav se Swarnim Bharat ke और. So this is a part of year-long initiatives that we have initiated under the Azadi ka Amrit Mahotsav, and this particular program will be taken care by the cultural ministry in partnership with Brahma Kumaris. You know about Brahma Kumaris already. I am just assuming that you know about Brahma Kumaris. Okay. So this program will have more than 30 campaigns and over 15,000 programs at the global level. Okay. So this Azadi Ka Amrit Mahotsav, we discussed it recently. I think 2-3 days back we discussed about it, and it is the initiative of Government of India to celebrate and commemorate 70 years of progressive India. So this is dedicated to the people of India who have been instrumental in bringing India in it thus far in its evolutionary journey. Okay, so this program started on 12th of March in 2021, because from that day onwards the 75-week countdown started to our 75th anniversary of independence. Okay, which would fall of course on the 15th of August 2022. So now let us see the next topic, which is National Mission on Use of Biomass. So Union Power Secretary has chaired the second meeting of steering committee for the National Mission on Use of Biomass. So this Power Secretary has overseen the progress of this National Mission on Use of Biomass. So you know that this National Mission on Use of Biomass was launched in May 2021, and under this mission we want to utilize biomass, that is the stubble that we have that we get in our farms, by which is generally burnt by the farmers, and it causes pollution. So as a unique method to address this issue, the government decided to launch this national mission on use of biomass, in which we collect this biomass and we burn it with coal for generation of electricity through thermal power plants. Okay, so like there is ethanol blending in petrol, this is biomass blending in coal with coal, so that we can create power through our thermal power plants. Okay, so under this program we were already co-firing biomass with about 5% of biomass with the coal. So for example, if we were using 5 tons of I'm sorry, 95 tons of coal, then we were using 5 tons of biomass with it
for burning, for co-firing, but now the mission wants to increase that biomass to 10%. Okay, so in October 2021 they released the guidelines saying that we have to increase its use from 5 to 10% now. So now 90 tons of coal would be fired in the boiler, and 10 tons of biomass would be fired in the boiler, so as to create heat and generate electricity from the thermal power plants. Okay, so this mission is of course benefiting the farmers also, because it is creating additional income for them. And this mission is launched by Ministry of Power, so that we can utilize this biomass in our coal powered thermal power plants. We are also saving coal, and we are also utilizing this biomass. Okay, so yeah, under this program we are also going to undertake research and development activity to see how we can improve our boiler design so that it can handle the higher amount of silica and alkalis which is present in our biomass pellets. Okay, so now let us see the next topic, which is I4F. So I4F is a program between India and Israel, under which we have created industrial R&D and technological innovation fund, and experts from both India and Israel participated in its eighth governing body meeting, and they approved about three R&D projects which cost about $5.5 million. Okay, so what is this I4F? So it's a cooperation between Department of Science and Technology and Israel Innovation Authority. So it promotes, facilitates and supports joint industrial R&D projects for a bit which are undertaken between the companies of India and Israel. Okay, so from India's part, Global Innovation and Technology Alliance, that is GITA, is appointed to manage this I4F program with Israel, and from Israel, Israeli Innovation Authority is implementing this program. Okay, so what is GITA? We have to see this. So this is a public-private partnership program between Technology Development Board and Department of Science and Technology, and these two government organizations are participating with CII, that is our industry, Indian industry, so as to professionally manage government's industrial innovation funds. Okay, so this GITA offers funding, capacity building, deployment, and strengthening of innovation ecosystem in the country, and it also offers about 50% of R&D expenditure to a project which is being developed in partnership with industry from Canada, Israel, South Korea, Italy, Spain, and Sweden. Okay, so now let us see the next topic, which is antimicrobial resistance. So like I was telling you earlier that this antimicrobial resistance is becoming a huge concern for us. It is causing a huge number of deaths around the world, even much ahead than HIV or malaria. So antimicrobial resistance means that earlier the drugs which you were using, the antibiotics which you were using to treat any bacterial infection, have become uh, unusable because the bacteria has developed resistance against them. Okay, so how this antimicrobial resistance is developed? So generally people use these drugs indiscriminately without the advice of the doctors, and what happens is that sometimes they don't even complete the course of antibiotics. So what happens is that the bacteria develops resistance against such drugs, and it the after this bacteria develops and it transmits to a sizable number of population, the drugs which were used earlier to treat that bacterial infection becomes unusable, and this bacteria develops resistance against them. So we have seen that many drugs, like certain bacteria have developed multi-drug resistant. Means they have developed resistance against several types of antibiotics. Okay, so it such multi-drug resistant bacteria have become a leading cause of death in the world. About 1.27 million people died in 2019 as a direct result of antimicrobial resistance, and 49.5 lakh deaths were associated with AMR, in which drug resistant infection was implicated. It means that we identified which bacteria is causing this particular disease, but because right antibiotics were not given, it it turned out to be fatal for the patient. Okay, so
HIV/AIDS and malaria have caused about 8.6 to 6.4 lakh deaths respectively, which is much less than the deaths caused by antimicrobial resistance. Okay, so six multi-drug resistant pathogens or bacteria like E. coli, say, or S. aureus, Klebsiella pneumonia, S. pneumonia, A. bomani, A. P. Aeruginosa. So these multi-drug resistant bacteria have directly led to about 9.29 lakh deaths around the world. So like in COVID situation, people are using this antibiotics indiscriminately, even though COVID is a virus disease. Okay, it's a viral disease, so these antibiotics are not going to work anyway on this disease, but people are still using it despite the strict advice of the government against using these antibiotics, but people are using it. Even some doctors are prescribing it because of whatever reason, of course. But this is becoming this is has the potential at the global level. It is being done, and even in India it is being done at a large scale. So now, when all the people or a higher number of people are using these drugs without the prescription of the doctors, it will definitely create a resistance to the bacteria in their body will create resistance to so many of these antibiotics, and it will have the potential to create another pandemic, which this time could be bacteria induced pandemic. Okay, so like you may have heard recently that sepsis has become a new problem for in India. Certain hospitals have reported several cases of sepsis because people have been using these antibiotics indiscriminately, and certain forms of sepsis, which bacteria have developed have become multi drug resistant. Okay, so just keep an eye over this issue, because people are using these drugs, antibiotics, indiscriminately during this COVID-19 pandemic, and this has the potential to create another pandemic which will be induced by bacteria now. Okay, so anyways, now let us see the next topic, which is anti-defection law. So BSP chief Mayawati ji has called for a stringent anti-defection law. And what is this entity? So what is happening currently is that people are jumping from one party to another during these five state assembly elections. That's why she has called that anti-defection law must be strengthened further, so as to dissuade such people who jump from one party to another. Okay, so what is the 10th schedule or the anti-defection law? So it was inserted in the constitution in 1985, in which legislators may be disqualified on grounds of defection by the presiding officer of a legislature. Okay, so what are the grounds of defection? So in case the person voluntarily gives up the membership of his party, or he or she disobeys the directives of the party leadership on a vote, especially when the party has issued whip. So this law applies to both parliament and state assemblies. Okay, so in Kyoto Holohan versus Zakilu and others case, the Supreme Court observed that judicial review cannot be made available at any time before the speaker or chairman makes his decision. Okay, so it means that until the speaker or chairman, that is the presiding officer, takes a decision on disqualification, the Supreme Court or any court cannot interfere in such matters. Okay, so this particular loophole is being utilized by the presiding officers, especially in state assemblies, where we have seen that the speaker of the house do not take a decision for years, so that the person cannot the decision of the other speaker cannot be challenged in the court. So under the 10th schedule, the anti-defection law was prevented from judicial review. But of course, under this 1992 judgment of Kyoto Holohan case, the Supreme Court struck down this provision that anti-defection law would be, of course, now under judicial review. But until the presiding officer gives his order, the Supreme Court or the court may not interfere with that. Okay, so what is the way forward? So
several expert committees have been formed, and they have suggested that we should make this anti-defection law provisions similar to the process which is followed during while dealing with the issue of office of profit. So now it is being suggested that this decision, which is otherwise taken by the presiding officer, must be taken by either the president, of course in case of MPs, and or the governor, of course in case of MLAs, upon the advice of election commission. What it means? It means that the disqualification of a legislator must only be done by either the president or the governor on the advice of election commission, and the role of the speaker or the presiding officer of the house must be eliminated, because of course that is uh, inspired by political considerations. So that's why this recommendation has been given. Okay, of course it has not been accepted as of yet by any government whatsoever. So we have to see what will be done to improve this anti-defection law in the near future. Okay, so these were our topics for today, and this week today itself we have shared the weekly compilation of current affairs. So just download it from our Telegram group. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.